हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संभव और आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। आई मीन टू से दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी माइट बी सॉल्विंग टिल नाउ। दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन वेरी, आई थिंक इन 2008 और 9 उस वाली सीरीज के जेईई एडवांस्ड में आया हुआ है। तो उस टाइम पे शायद IITJEE हुआ करता था, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना आना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है, इससे आपको क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी हल्की फुल्की कॉन्सेप्चुअल नर्चरिंग होगी। एंड आई हैव पिक्ड दिस प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज कि हम इतने दिनों से काफी ठीक ठाक लेवल के प्रॉब्लम कर रहे थे, तो आज हमें कुछ सिंपल सा प्रॉब्लम भी करना चाहिए, तो दैट मतलब आपका जेईई मेन का भी एक बेस बना रहे ताकि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, मेरा मोटिव हमेशा से यही रहा है कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी भी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले तो यार ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ये तो मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये जो चैप्टर है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक सेक्शन है जिसमें आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स को इवेलुएट करते हैं, जिससे आप डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करते हैं। तो उसी में ही एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a टू b f of x dx, this must be equal to integral a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, हम बस यही प्रॉपर्टी लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर क्रक्स, दिस इज नोन एज द किंग्स प्रॉपर्टी और किंग्स रूल। तो मतलब दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के किसी भी प्रॉपर्टी के सवाल में आप ये लगाते हैं, आपका एक बहुत ही फॉर्म सी चीज बनने लग जाती है और आपके दिमाग में आइडियाज डेवलप होने लग जाते हैं। दैट इज व्हाई आई जस्ट थॉट ऑफ पिकिंग इट अप, सो दैट मतलब आप लोगों का वो वाला माइंडसेट भी रिफ्रेश होता रहे। So I think this is a very simple problem and anybody can solve it. So we are involving just only 2 steps in this problem, so I won't take much time in doing that. Okay, I'll just write this entire expression once. So this x dx I'll just club up and बहुत सारे लोगों को पता भी लग गया होगा कि हम कैसे करेंगे इसे। तो sin of log of x minus x square, okay, oh sorry, log of 6 minus of x square, so this was log of 6 minus of x square, so this is the scenario। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट इधर नहीं है, ब्रैकेट बाहर है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज उससे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, बट नो नीड, नेवर माइंड। ओके, आप क्या करेंगे, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, यू कैन पुट एक्स स्क्वायर एज अवर टी, then our 2x dx becomes our dt and x dx becomes dt divided by 2. Great. So this becomes dt divided by 2 and this entire integration. Now let us think of the limits. When x was equal to natural log of 2 का square root, then t would be equal to ln 2. This is quite obvious. हम लोअर लिमिट को जब किसी एक लिमिट से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें यहाँ पर अगर x की लिमिट है तो यहाँ पर भी x की लिमिट है, और जैसे ही यहाँ पर अगर हम t की लिमिट डेवलप करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन भी एज अ t ही चाहिए होगा। t के ही फंक्शन में कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या बन रही है उसको हमें इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स आई कॉल इट x1, देन माय t1 इज दिस एंड माय xi दैट इज x higher, that is square root of natural log 3, then my t2 will be equal to natural log 3 because square function है। It is quite obvious. I don't think इसमें किसी को explanation की कोई ज़रूरत है, but just in case अगर किसी को ज़रूरत है then they can definitely ask in the comment section, but I think it is quite clear, सभी को ये पता होता है। ठीक है, so let me substitute the x square as t in the entire expression. To make it just simple, I'll just write the lower limit, that is ln 2, and higher limit, that is natural log 3, and sine of x square can be written as sine of t, x dx can be written as dt divided by 2, so I can take the 2 outside because it is of course not, it is half dt, not a dt, d of t by 2, this is not, although doesn't matter, you can write it in any sense you like, but still, just for the sake of clarity, this is half dt and not d of t by 2 because it was never made. ठीक है,
तो यहाँ पर साइन टी डी टी है और यहाँ पर भी साइन टी बन जाएगा प्लस साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस टी बन जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट आई विल कीप दिस इन ब्रैकेट सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट आउट, ठीक है। नाउ आई कॉल दिस इंटीग्रल एज माय आई। ग्रेट. What if I apply this property, the property that I was discussing, the King's rule? Or when I apply it to this expression, if I call my f of t, I'll call my f of t as sine t over sine of t plus sine of ln 6 minus ln of 6 minus of t. Okay, what if I apply the definite integral property, that is the property that I'm discussing? When I apply it over here, my f of this sum of limits, that is ln2 plus ln3 minus t, when I substitute t by this expression, I'll get sine of ln2 plus ln3 can be written as ln6. Okay, ln2 plus ln3 can be written as ln2 into 3, that is 6. Okay, so because I have this in my mind, I can simply write it ln6 minus t. Okay, divided by t was replaced by ln6 minus t. Okay, so sine of ln6 minus t plus sine of ln6 minus of ln6 minus t. So this entire expression becomes sine of ln6 minus t upon sine t plus sine of ln6 minus t again. Okay, and from the property of definite integral, what do I know? I simply can write this entire expression in this format. Okay, now I know that my half ln2 to ln3 sin t dt upon sin t plus sin of ln6 minus t, इसका जो वैल्यू है दोस्तों, जो इसका वैल्यू है, दैट इज अवर आई, ठीक है। Okay, so I'll just separate, just these things are different. Okay, and also I know that if I apply the property of definite integral, this will become ln2 to ln3 sin of, because अगर मैं f of ln6 minus t का इंटीग्रल देखूं from the same limit a to b, let's say, ठीक है, तो that will be integral यहाँ पर ln2 to ln3 का दो यार, ठीक है, ln2 to ln3 f of t dt, ठीक है, तो दोनों इंटीग्रल सेम होने वाले हैं। तो आई हैव कैलकुलेटेड दिस एक्सप्रेशन, दिस बिकम्स साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस टी अपॉन साइन टी प्लस साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस टी। अगर किसी को ये करने में दिक्कत आती है, देन ही मस्ट और शी मस्ट रेफर टू एनसीईआरटी बुक, देयर इज नथिंग हार्ड इन डूइंग दिस, ठीक है। So if I call this my equation 1 and this as my equation 2, let me simply add these two, ठीक है। So my half will be common. What is the value of ln2 to ln3 sin t dt upon sin t plus sin of natural log 6 minus t plus integral ln2 to ln3 sin of 6 minus ln6 minus t upon sin t plus sin of ln6 minus t, ठीक है। This becomes, and इस साइड हमारा क्या बन जाएगा, i plus I, that is equal to 2i. I just added the first equation and the second equation. I hope it is clear till now, and let's then simply evaluate what we finally get. Okay, तो यहाँ पर अब क्या ध्यान देना है अपने को ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रल a to b, अगर इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x है प्लस इंटीग्रेशन a to b g of x है, तो इसका वैल्यू हो जाता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। वी आर जस्ट डूइंग दैट, सो दिस इज नथिंग so special about it. So let's try to just I don't wish to just simply mess up with this, that's why I just want to show you the steps, nothing else. Okay, so what will be our final expression accordingly?
Accordingly, this will become half of integral ln2 to ln3 because limits are same. हम इसे सिंपली लिख सकते हैं sin t प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस टी अपॉन sin t प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस टी dt. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है एंड दिस इज इक्वल टू 2i. ठीक है, और आई कैन सिंपली टेक दिस 2 एज वेल. So I'll take this 2 as well and this final expression will become 4i. Just a minute, let's do this. So this becomes 4i. Great. Now we have our 4i. I have to evaluate I, right? So what we are supposed to evaluate, just for the look, I think we have to evaluate, yes, we have to evaluate I. So this is quite simple. I think everybody can do it. Just a minute. Perhaps sometimes this worries me up. Anyways, let's continue solving and finish it up and wind up today's video. ये cancel हो जाएगा. This becomes ln3 minus of ln2. डिफरेंस ऑफ लिमिट्स बच जाएगा ना. जब dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t और उससे हमें क्या मिलेगा, t on the interval ln2 to ln3. So this becomes ln3 minus ln2. this का वैल्यू हो जाएगा 4i और our final answer is 1 by 4 ln of 3 by 2. So this is the value of I. Nothing special in it, I guess. I think everybody would have been able to solve it. This is a very simple problem. So 1 by 4 ln 3 by 2. So A option was the correct answer. Just I wish to get you through this property of King's rule, the definite integral. And I think more or less we are done with this problem and there's nothing special in it. All you needed to do, it is a typical main level problem. आज की डेट में this was asked in JEE Main. So this is a very simple problem. There's nothing difficult in it. And that's all from my side for today. I hope you had a great time solving this problem and solve this within the required time frame. So thank you everyone for watching this video and I'll see you in the next video. Have a great time. Bye bye.